सो वेलकम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं द लेटेस्ट ट्रांसफर राउंडर विच इज गोइंग ऑन एंड वी Red Devil NCR are going to talk about it. Today I'm joined by Ojas and Vinayak. Whenever there is a transfer, you will meet them both all the time. And since we last talked about Felix to United, जो ओजस भाई बड़े cheer कर रहे थे, it's sadly not happening because Chelsea ने आज deal struck कर ली है with them with paying his 6 month all salary and 16 million का जो salary package मिला है which is cover his wages of course till June. And meanwhile United is also getting to be done. Vergos का deal आज हो जाएगा as per top transfer rumors from Netherlands and also from Besiktas के जो close rumors है कि the club has agreed that Vergos is leaving as per his sign when he was doing farewell his last match. And also Barcelona have seems to transfer listed Memphis Depay, Ferran Torres on a loan option, and Ansu Fati with Rafinha are meant to be sold this winter because Daniel Olmo is highly linked with Barcelona. As Daniel Olmo जब अपने फ्रेंडली स्ट्रीम पे गए थे तो ही वाज आस्क्ड दैट इफ यू विल गेट अ चांस टू रिटर्न टू बार्सिलोना व्हाट विल यू डू, सो ही सेड आई एम रियली हैप्पी टू जॉइन स्पेन, इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू, आई ऑलवेज लव बारसा. और भी ट्रांसफर लिंक्स है, वी विल लेट यू नो गाइस. लेट्स स्टार्ट विद ओजस भाई. व्हाट वेरगोस टू यूनाइटेड, कोडी गैक्पो टू लिवरपूल एंड जाओ फिलिक्स टू चेल्सी. क्या ये टॉप सिक्स अप्रोच कर रही है यूनाइटेड बीइंग इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन अभी? नहीं, टॉप सिक्स के लिए हिसाब से तो साइनिंग करी नहीं। टॉप सिक्स के हिसाब से हमारे पे प्लेयर्स हैं। अब टॉप सिक्स तो हम लास्ट सीजन भी आए थे। व्हाट वी हैव ऑलरेडी अपग्रेडेड ऑन द प्लेयर्स दैट वी हैव। हमने कुछ साइनिंग्स करी, एरिक्सन किया, कैसेमेरो किया। वी आर फाइटिंग फॉर टॉप फोर नाउ। तो अब टॉप फोर के लिए आप कह सकते हो हमारे पे प्लेयर्स है, पर क्या हम टू बी टाइटल कंटेंडर्स इफ पॉसिबिलिटी दैट हम आर्सेनल और सिटी को गलती से हरा दें। मुश्किल मुश्किल है आर्सेनल और सिटी के फिक्सचर्स। क्या हम टाइटल ब्रेक कर सकते हैं? उसके हिसाब से साइनिंग्स नहीं है। बहुत ऑब्वियस रीजन है कि हमारा जो क्लब है वो ऑन सेल है, और जो हमारे पे जो लिक्विडिटी, जो भी फंड्स है वो है नहीं फिलहाल। तो उस हिसाब से जो साइनिंग करी है टेन हैग ने, जो जो बजट मिला है उसे लिमिटेड, उसे लगा है कि उसके पास ये प्लेयर साइन करने की वो है कैपेबिलिटी। तो ठीक है, क्योंकि फीलिक्स का लॉजिक नहीं बनता। मैंने लास्ट स्ट्रीम में भी यही बोला था। सपोज द प्लेयर प्लेज रियली वेल इन योर क्लब and without a buy option, it's just a holiday home for the player. A player changes its country, its club, and just comes to you for its wages. The other club is happy that they are off the wage budget for the season. They can save that money for the transfer window in the summer. And if the club is not giving you the buy option, then there was no logic for to go after Felix. And I believe how, how much I like the player. It's good that we didn't sign him. And I have never seen Weghorst, play properly. Only in Burnley I saw few glimpses. But whatever signings that we are after, and that is only Weghorst for now, and I don't think we will pursue another player. ये एक बैकअप क्रिएट करने के लिए है, ये चैंपियनशिप विन करने के लिए नहीं है। Coming to Vinayak, like I don't know Vinayak, you watch Bundesliga, but Vergos' stats is really good. He had a more impressive start for Wolfsburg and have a better start than Aubameyang in Dortmund when he was playing in Wolfsburg. He had scored around 62 goals in 120 games for Wolfsburg, and for Netherlands, he's been quite a good player. Like he's similar to a Luke De Jong type of player, but he's more taller. He's like a 6'6" player, can provide you assist in the box, and Gakpo and all के लिए he can be very good. विनायक आपका कैमरा बंद है. So Vinayak, what's your views on what Sorry, yeah. Vergos? You saw him in the World Cup also, like against Argentina. Vegas is a very dominant player in the box. It's not just his height, but his physical presence. He can be that target man जिसके आप मतलब ले उसको lay off दे सकते हो, and then you can have like strikers feeding off him and attackers feeding off him. And United have a lot of players who can feed off someone like a Rashford or someone like an Anthony can really benefit from someone like Vegas being the target man in the box. Coming to another thing, ये क्वेश्चन सीधा आपको है कि राफीना जो एक टाइम पे was a steal according to in the summer for player Barca is now a flop because Barca उसको in half a season wants to sell him to get Daniel Olmo as possible because it's rumored that summer में he will be very
costly because many clubs will be after him. जिसका जो price होगा it will be more than 90 million. The amount of he had a good World Cup. He can play on left, he can play on right, he can play as centre forward, can भी खेल सकता है. Very versatile. At Barcelona and Xavi loves that player, but उसको लाने के लिए they don't have that financial pull, so they are trying to sell some players जिनको game time नहीं दे पा रहे. Even Hector Bellerin is going to Real Betis as per the rumors because Real Betis is selling the star fullback to Aston Villa. So maybe Hector Bellerin can be sold with an amount of 10 million so that Barca can raise funds. So what are your views on this? मतलब we have saw lots of transfers of these players जो आते हैं समर में विंटर में बेच देते हैं बारसा और they just offer their contracts. To be fair, I don't think we're paying. It will make too much of a difference to the FFP if we sell Hector Bellerin. So that's why I feel there's really no point of selling him. Anyway, we don't really have any right backs. Kunde, while he is a right back, he's not actually a right back. He's more of a centre back who can play as a right back. I feel that we've got a lot of problems with our right back position because we don't really have someone who's sorted, who's like an ace-town player, and that's why I don't think we should sell Hector Bellerin as compared to like when you talk about other players that Barca are looking to sell. So many players who just haven't been able to make that impact. Lewandowski is doing brilliantly, but apart from him, nobody's really stepped up the way that they should have, considering the exorbitant prices Barca paid, considering the fact that they leveraged their own future to get those players in. It's been rather shambolic and disappointing. Let's see how that goes. Monish has said very right thing that Vergost is known for drawing attention in the box, but which can also alert the defense. But it's a good thing कि उससे क्या होगा Rashford and Bruno can have that cheeky finish in the box. So for example, Ojas bhai, we all know that Odison, like Igalo was coming for loan in United. We all were like, "Ki, bro," because that time even Marcel and Rashford दोनों injured थे, and we needed a backup because that time. But Igalo को जब हम जितने भी हमने games खिलाए, he scored in that games. Like he started for 15 games for us and he scored around 8 goals. मतलब जो उसका span था 1.5 year का. So I guess Vergos is a type of a player जो Eric Ten Hag wants because he gives him a vibe of like a Memphis or a Gakpo जैसे ही लंबा है. When Joao Felix signs, Chelsea will have made more signings this season 12 than any other. They have won matches. I can't say anything about Todd Bayer and what's going in his head. He has signed too many forwards in this window and not giving Hakim Ziyech a single chance. और अगर चांस दिया भी तो उसको पूरा गेम नहीं खिला रहे then of course Sterling is injured now so and Christian Pulisic is injured though they might be looking to getting more a squad depth but of also क्या इतना अटैकर जरूरी है आई डोंट नो ब्रो बट जाओ फिलिक्स टू चेल्सी इज समथिंग आई डोंट नो या तो वो जाओ फिलिक्स के लिए हॉलीडे होम होगा या फिर चेल्सी के लिए एक और कर्स होगा बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू सेल ओबामेयांग दिस सीजन दे आर लुकिंग टू अफोर्ड हिम अब उससे जो एक्सपेक्ट किया था ही डिडंट डन दैट इन द लास्ट मैच एंड आई गेस that's what it is and just why do you think any outgoing from United this season is in the winter a player who is looking for a move or a loan जो आप चाहते हो कि चले जाए तो अच्छा ही है क्लब के लिए भी और उसके लिए भी नहीं विंटर में तो आई डोंट थिंक सो द मैनेजमेंट वुड लेट एनीवन टू मूव फ्रॉम द क्लब बहुत ऑब्वियस रीजन है ब्लीक स्क्वाड है और जितनी क्वालिटी अभी रख सकते हैं रख लो क्योंकि राइट नाउ सेलिंग अ प्लेयर माइट गेट you will get a lot of options but buying a player can be a tedious task for a club like Manchester United because whenever Manchester United gets into the market suddenly the prices hike up like anything तो करंटली मेरे को नहीं लगता कि हमारे टीम से कोई प्लेयर बेचा जाएगा बिकॉज हमारे पास जो विंडो है वो 15-20 दिन की बची है एंड टू फाइंड अ suitable replacement for players like even if I say Maguire has to be sold maybe Bissaka is on its way ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं इनका रेडी बैकअप अवेलेबल नहीं है चाहे जितना स्काउटिंग हो रखी हो कुछ हो रही हो but we should always remember that winter market is a it's something like a gamble always like a gamble signings either work or they don't summer summer signings are usually signings scouted for the whole season. They take longer periods to scout a player. They shortlist the players. They move up to the clubs. They have a longer period to negotiate the fee is negotiated over the period of 1 or 2 months, and the deal gets through. पर विंटर में बहुत जल्दी होता है चीज तो कभी बार आपके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता आपने एक क्लब ने बोला कि हम 60 मिलियन से कम का प्लेयर नहीं बेचेंगे आपने कहा ठीक है अब लेना है जरूरी है यही फिलिक्स के साथ हुआ जो चेल्सी ने करा लेना है जरूरी है क्योंकि इंजरीज है तो
ये बहुत पैनिक बायर्स होते हैं विंटर में, तभी विंटर इज लाइक अ गैम्बल, इट्स ऑलवेज लाइक अ गैम्बल। काफी लोग ये समझते हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस वाज अ वेरी गुड साइनिंग इन द विंटर, बट वी हैव टू आल्सो रिमेंबर दैट एलेक्सिस सैnchez भी विंटर में ही आया था। एलेक्सिस सैnchez भी विंटर में ही आया था, and he was one of the best players in the league. Mainly Alexis Sanchez United आना was like it's like everything I could have dreamed of. One of the best players in the league that time. तो ठीक है, मतलब अगर अगर आप बाहर से देख रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लोन के लिए काफी प्लेयर्स जा सकते हैं, पर क्या हमारा क्लब किसी को बेचेगा फिलहाल? आई डोंट थिंक सो। Manish Bhai is quite active in the comment section, which most of the viewers should be or we. He said Anthony Langa in summer is going out on a loan or transfer, but surely he will go. I guess Everton is highly linked with Anthony Langa to get him on loan in winter because they need also squad depth and also El Nazari from Morocco, who is highly linked with West Ham. मतलब जो सिविया में उसका अच्छा लोन स्पेन नहीं गया, but he had a great World Cup with Morocco. So when I what is the profile of El Nazari basically? मतलब guy started good before Sevilla. He moved Sevilla in expectation कि I will get a European football, but now he's not settling in. And Sevilla ने already बहुत outgoings कर लिए with Diego Carlos, him, Kunde. So what Sevilla is thinking? Even Lopetegui is gone and कोई बचा ही नहीं है सेविया में देखा जाए. Sevilla, I think they do a lot of business which they shouldn't do. Matlab, they keep trying to change their squad entirely, which always backfires for them. And considering how they are, where they are right now, they're fighting for relegation when they're clearly a team that should be in the top four, battling for the championship, if not like competing at least for the Champions League places. So I don't understand what's happening at Sevilla. They even sacked Lopetegui. They've got a new manager and they're changing their front line. El Nazira, I feel, is a proper out and out number nine who's just not settled in with the new manager with the new tactics. He had a crazy role, like a very big role to play at Monaco at the World Cup, but after that, it's just like his time back at Sevilla just does not look as good. Like he just does not. Any game I've watched of Sevilla, he just looks very uncomfortable. So do you think El Nazari to West Ham is a good because then West Ham का attack होगा Samaka, Antonio and El Nazari, three number nines playing at right forward, left forward and center forward. Then they've also What do you got think, Otis bhai? Jared Bowen, right? Who almost plays as a backup number nine. He can really come and score goals off the right, and I don't know. I feel like that's overkill. नहीं, ये वेस्ट हैम की तरफ से बहुत अच्छा बिजनेस है लॉन्ग रन में, क्योंकि एंटोनियो का आई डोंट थिंक सो दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर। एंटोनियो बहुत इंजरी प्रोन है, तो वेरी गुड बिजनेस बाय वेस्ट हैम। अब उन पे दो प्लेयर्स है जिनकी अगर उनका मन भी नहीं करा क्लब में रुकने का, दे कैन चार्ज हैवी ऑन दो बोथ द प्लेयर्स। वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, वेरी गुड स्ट्राइकर्स, एंड मुझे ऐसा लगता है वेस्ट हैम काफी फ्यूचर में इनके थ्रू कमाने वाली है। और सेविया का डाउनफॉल उनके खुद पे है। आपने दो सेंटर बैक्स जो आपको लीग में परफॉर्म करके दे रहे थे, एक ही विंडो में जब बेचोगे तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला ही है, क्योंकि आप आप अच्छे प्लेयर्स खरीद सकते हो, लेकिन वो जो रिदम और वो जो केमिस्ट्री होती है, वो आप जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए। क्योंकि कुंडे, आई अंडरस्टैंड प्रेशर था बारसा से, पर कार्लोस आई डोंट थिंक सो विला से कोई प्रेशर होगा। ये तो कार्लोस ने ही बोला होगा फॉर अ बेटर वेज स्ट्रक्चर दैट ही वुड हैव गॉटन प्रीमियर लीग, बट आपको ये भी देखना चाहिए कि दो सेंटर बैक जो आपके खेले हैं, पूरा सीजन खेले हैं, आपने उनको बेच कैसे दिया एक ही विंडो में? कहीं ना कहीं तो रेpercussions होने ही थे। और आपने कोई बैकअप ट्रेन भी नहीं कर रखा, आपका कोई बैकअप है ही नहीं आपके पास, तो आई थिंक डाउनफॉल उन्हीं को जाता। Coming to one more club, Newcastle is highly linked for signing Yusuf Mukuku. Mukuku का जो wage structure है, Newcastle is trying to offer him a very good wage structure, which also offering him a number nine role because they are done with Cresford. वो 40 million गए, डूब गए. Now they're looking for Mukuku to lead the front line next season. So ओजस भाई क्या लगता है? Good move for Mukuku itself. मुझे लगता है जैसे कि मुकुकू तो फ्री एजेंट है, तो 30 मिलियन आई थिंक वो जनवरी में तो नहीं खरीदना चाह रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है। They क्योंकि are offering मुकुकू him इज 20 million already कि 20 million देकर because आई थिंक Mukuku का आई ये थिंक मुकुकू मुकुकू इज अ फ्री एजेंट है, तभी तो बारसा उसके पीछे है, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
Huh, you're spot on, but I think they're paying Moukoko 30 million. They're like, Barca मत जा तू यहाँ आ जा. हाँ, अच्छा, एक्चुअली न्यूकासल का मनी दिखा रहा है they मुकुकू are की they are paying the premium. They are paying premium signing fee for, मेरे हिसाब से तो देखो, अगर अगर मैं एक यंग प्लेयर हूं तो न्यू कैसल जाने का प्रोजेक्ट जो है, चाहे जितना भी अच्छा हो, बट न्यू कैसल को अभी भी एक दो चीजें करने की जरूरत है. सबसे पहले टॉप फोर मेंटेन करने की जरूरत है, चैंपियंस लीग रेगुलर खेलने की जरूरत है. डॉर्टमंड रेगुलर सीएल खेल रहा है, और बारसा एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एंड यू विल बी द अंडरस्टडी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड. लेवेंडोस्की के अंडरस्टडी बनना, ये यहाँ पे क्रिस वुड की रिप्लेसमेंट होना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा न्यू कैसल उसे साइन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा, तो मैं कह रहा हूँ प्रोजेक्ट किसका बेटर लग रहा है वो देखना चाहिए. ये तो वही वाली बात होगी, अभी हम जैसे ग्रुप में हंस रहे थे, फिलिक्स आर्सेनल और यूनाइटेड को छोड़ के चेल्सी जा रहा है, सेइंग दैट प्रोजेक्ट बेटर है, बट इट्स लाफेबल, इट्स जस्ट लाफेबल. चेल्सी का प्रोजेक्ट कुछ अच्छा नहीं है, चेल्सी स्ट्रगलिंग. तो सेम मेरे को न्यू कैसल और बारसा में आई विल ऑलवेज प्रेफर बारसा. पर आगे मनी पावर जैसे तुम लोग कह रहे हो, क्या होता है कुछ नहीं पता, बट आई डोंट थिंक सो मोकुकू विल गो टू न्यू कैसल. हम्म. सही बात है. एंड ऑल्सो नो प्रीमियर लीग इज ऑल्सो ट्रैक लाइक एस्टन विला बहुत ज्यादा हीट अप इस विंडो में. दे वर वेरी हीट अप ड्यूरिंग द समर एंड नाउ इन जनवरी ऑल्सो. आई मीन बावला हो गया देखा जाए ना एमरी. वो जब भी जिस विंडो में जाता है हमेशा ही वांट्स टू साइन फॉर 4 to 5 प्लेयर्स. लाइक ही विल रिप्लेस लाइक दिस गाय, क्या नाम है उसका, मोरेनो. इसका सरनेम में मोरेनो है ना, विनायक, राइट, जो रियल बेटिस से आ रहा है फुल बैक. इसका थोड़ा हाँ, प्रोफाइल बताना. आई मीन मुझे आई नो ही हैज मुझे सम हमेशा से वो एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक फुटबॉल. लगता था, पता नहीं, मैं उसे लेफ्ट बैक हाँ, से कंफ्यूज वो कर रहा वो था बार वो बार. अल्बर्टो मरेनो है, ये एलेक्स मरेनो, ये राइट बैक खेलता है फॉर सम रीजन. मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया. आई हैड टू लुक हिम अप बिकॉज़ दे सेड के बेटिस आर लुकिंग फॉर समवन टू रिप्लेस मोरेनो. लाइक हाँ, मोरेनो लेफ्ट बैक था, ये क्या हो रहा सो है? एस्टन विला इज साइनिंग मोरेनो, हाँ, राइट. और मैटी कैश को दे बट हैव सब आउट. एंड मैटी कैश को प्रेफर नहीं नो, करता हूँ ना मैं. दे दे आई डोंट थिंक सो मैटी कैश इज अ प्लेयर दैट कैन बी ड्रॉप्ड. ही उसने इज कर दिया टू है. गुड ही टू इज बी प्लेइंग एशली ड्रॉप्ड. यंग इन ही प्लेस ऑफ हिम. एशली यंग आई दो थिंक मैचेस से खेला लगातार उसकी ये तो जगह. यूनाइटेड का एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए फिर तो. अगर बिसाका जाता है, हाउ हाँ, कैन यू ड्रॉप अ प्लेयर लाइक कैश? उसका, वही. मैं कैश को सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं देख रहा हूँ, मैं कैश को फॉलो कर रहा हूँ. यू जस्ट कैन नॉट ड्रॉप अ प्लेयर लाइक, वो हार्डली 24 का है अभी. 24 में वो ये मेच्योरिटी दिखाता है. रैशवर्ड को, अगर जो हमने गेम हारा था विला के अगेंस्ट, रैशवर्ड को जैसे उसने मैन मार्क करा या कुछ भी करा, यू नीड प्रेटी गुड डिफेंसिव एबिलिटी. आप मैटी कैश जैसे प्लेयर, ठीक है, मैं ऊना एमरी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यू कैन नॉट ड्रॉप अ प्लेयर लाइक मैटी कैश. एंड यू कैन नॉट ब्रिंग मोरेनो, हाउएवर गुड ही इज, टू से दैट तुम मेरा फर्स्ट चॉइस बनोगे, तुम बहुत अच्छे हो. ये तो ये थोड़ा फेवरेटिज्म हो गया, थोड़ा सा फेवरेटिज्म हो गया. आई यू जस्ट कैन चेक नॉट कर, ड्रॉप ये वो मैटी है, कैश. एलेक्स मरेनो भी लेफ्ट बैक है. हाँ, एलेक्स मैं मोरेनो वही, के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं पता है एक्चुअली. हाँ, 11 असिस्ट 4 गोल मैं इन बता रहा 15 हूँ, गेम्स. लूका लूका डीनिया का लुका डीन. बैकअप आ रहा होगा, लूका डीनिया का बैकअप आ रहा होगा. यू जस्ट कैन नॉट, मैं कभी भाई, whoever is watching Premier League for past 3 years, you cannot drop Matty Cash. ऑफ कोर्स Matty वो सबके Cash, टीम फॉर में श्योर. था. वो इट्स लाइक, उस पे सब है, ठीक है. हर डिफेंडर का कोई ना कोई वीक पॉइंट, हर प्लेयर का कुछ ना कुछ होता ही है, बट ठीक है. अदर देन दैट, व्हाट, ही इज अ ब्रिलियंट राइट बैक, वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स इन द लीग मेरे इन द लिए तो. प्रीमियर लीग डेफिनेटली, फॉर श्योर. ये प्रीमियर डेफिनेटली. लीग में, मेरे को जब मैं फीफा खेल रहा था, सॉरी मैं कुछ, तो मेरे में एलेक्स मोरेनो लेफ्ट बैक आ रहा था लास्ट सीजन, जब मैंने लास्ट सीजन ली थी. तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये किस पोजीशन के लिए आ रहा है, पर ठीक है, आई थिंक इट्स लेफ्ट बैक. विनायक इज सेइंग इट्स लेफ्ट बैक, तो वो लूका डीनिया के बैकअप के लिए आ रहा था, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के अराउंड लूका डीनिया के नी में इंजरी हो गई थी बहुत भारी. एंड लूका डीनिया का ऐसा ही है कि आई थिंक थोड़ा सा ना स्टेबल करने के लिए सीजन, लूका डीनिया पे प्रेशर ना आए, तो इस वजह से लिया जा रहा है. उसको इंजरी हुई थी एक हैवी. एंड व्हाट अबाउट मैटी, व्हाट डू यू थिंक एशली यंग इज प्लेइंग टू गुड कि मैटी कैश नहीं आ रहा? और कुछ पर्सनली यू थिंक देयर इज लाइक जैसे मिंग्स और इसका था जेरार्ड का समर में. मैं मैं देखो, मुझे नहीं पता मिंग्स और जेरार्ड का क्या था, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि
मिंग्स एक प्लेयर है एस्टन विला का जो आई थिंक ही इज लाइक हैरी मैगवायर देयर, लेकिन अ बिट ऑफ स्पीड ही हैज, बट वो कंसिस्टेंसी शो कैप्टन अच्छा करता है। है। हम्म, हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी शो करता है, उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभा। देखो भाई, मेरी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से अगर मैं खेलूं तो मैं डिसेंट हूँ भाई। अगर हम्म, मेरी कैपेबिलिटी, अगर मैं 78 रेटेड प्लेयर हूँ, मैं 78 रेटेड प्लेयर की तरह ही खेल सकता हूँ। अगर मैं हम्म, 74 72 की तरह खेल रहा हूँ तो मेरे तुम्हारे पे राइट है मेरे पास क्रिटिसाइज करने का। और मिंग्स कहीं ना कहीं हमेशा जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, कभी कभार उसका बुरा हाल हुआ है, बट ही हैज ऑलवेज गिवन 100%। और एशले हम्म। यंग, मुझे तो पता नहीं वो रिटायरमेंट के पास इतना बंदा है, व्हाट ही इज डूइंग इन प्लेस ऑफ मैटी प्लेइंग कैश ब्रिलियंट इन गुड दैट एक्चुअली। लाइन। नहीं, I respect Ashley Young, but really want to ask Una Emery or whoever it is that is running things at Aston Villa, that you have one of the best right backs that you can have. और यू कैन मतलब सेल टू अस। अगर 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 हाँ, अगर तुम मैटी कैश अगर तुम मैटी कैश को किसी टॉप सिक्स में अभी भेज, अभी चेल्सी को बोलो कि हम 10 मिलियन का मैटी कैश बेच रहे हैं, चेल्सी हाँ विल उठा गिव यू लेंगे। 10 million two times. They will give you बट 10 million two times. It's such a bollocks place to be. ये you just, मेरे को तो नहीं लगता. I think it is something to do with the tactics. Every manager has a tactic. उस हिसाब से Ashley Young सही खेल रहा होगा. But even in every tactic that a manager has, you need a player like Matty Cash to horn the wing attacks that are happening on whatever side of the flank. You always need आई a डोंट नो player like लाइक, Matty बट Cash. आई गेस मैटी कैश विल बी गुड सूट फॉर बारसा। अगर बाय चांस मैटी कैश लगता है ट्रांसफर लिस्ट पे, तो आई गेस यू विल भाई बी Vinayak एक्सपेक्टिंग। Vinayak has to first tell me why Semedo was sold. he Vinayak has ओके, he to just first was tell not me good on if the ball. He just was not good he on was, the ball. no, I He could understand he was run. not He could run. n- Was he could he was he, it's Barca is a club that can make anyone good on ball. I have seen that. तो Barca वही ना, Barca सर has मार a लिया था training उन्होंने, method. लाइक भाई नहीं होगा हमसे। But I think Semedo was also due to the financial crisis that was happening that नहीं, time. by then the financial crisis hadn't struck. एक्चुअली समेडो वाज क्योंकि बुलीड बाय क्योंकि डेविस एंड क्योंकि we द replaced him with Serginho Dest, who was better on the ball and quick, but for some reason could not pass. Okay, Another and problem is, Sergino Dest was meant to go to Bayern Munich. He was yeah, meant to go to Bayern Munich. Barca came at the last moment to last sign moment, him, हाँ, and Dest was seen as the future, whatever. Danny Alves मेसी But है। मिलान में। हर it's राइट बैक जो आता है, he's a Danny Alves है। like it's really impossible. Like I cannot say that every midfielder that comes to Man United is a Paul Scholes head. It's not possible to recreate legends of the. Exactly. अरे मेरे को वही लग रहा था, इवन आई वाज वरीड जब एस्पी को अटैक लिंक्ड हो गए थे, नो व्हेन Hmm. एस्पी वाज नॉट साइनिंग, सो बारसा वांटेड कि एस्पी आ जाए एटलीस्ट, वी विल हैव सम 2 or 3 years ऑफ हिम। एंड मुझे समझ में नहीं आता बारसा का राइट बैक का क्या सीन रहता है, कि मतलब नाउ हु you're इज प्लेइंग always राइट बैक, hungry आई for डोंट नो हु इज someone, but प्लेइंग। hmm. सर्जियो रोबर्टो इज गोना प्ले फॉर द होल सीजन अब यहाँ से। हाँ मतलब, और हेक्टर बेलरीन, whatever we can हेक्टर get out बेलरिन of him. सोल्ड, रियल बेटिस ने बात कर लिया उससे कि ब्रो वी आर वी आर सेलिंग, तो भाई तू आ जा, बिकॉज हेक्टर बेलरिन वांटेड टू कम रियल बेटिस, बट रियल बेटिस का ये था कि हम तुम्हें 10 मिलियन नहीं देंगे। हाँ, बट ये है कि मतलब हेक्टर बेलरीन की सेल से हमें फाइनेंशियली कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा टू साइन सम अदर प्लेयर, बिकॉज अपना वेज स्ट्रक्चर इतना मेस्ड अप है। राइट, राइट। यूनाइटेड का क्या लग रहा है, वेगोस नंबर 9 खेलेगा यार? मोस्ट ऑफ द स्ट्राइकर ही पूरा, मतलब Has प्रॉपर to play स्ट्राइकर। number 9, and मतलब maybe it'll be like Vegas Martial, other half, depending on tactics and like how ब्रो व्हाई Ten यू Hag थिंक is एरिक playing. टेन हैग वांट सो बैड, और वेगोस, और क्यों यू लुई वैन आलिस को खिलाता था डिस्पाइट हैविंग गैक्पो एंड Instant आगे impact ना, डिफेंस। मतलब you just have suddenly तुम्हारा अटैक एकदम एक अलग डायमेंशन ऐड हो जाता है। यूनाइटेड पे there's nobody who can really run in through like up for corners या कुछ, मतलब you have to rely on guys like Varane and Harry Maguire, maybe Casemiro, but like you don't really have that physical presence in the box, because ultimately तुम्हारा Anthony Martial and Marcus Rashford are not really guys who would मतलब who would be good for like long balls and like you know that link up play in the air or as a target man. आई डोंट नो व्हाई मेरे को एरिक टेन हैग का ऐसे लुई लोनाल्ड कूमन का वो कोट याद आ रहा है, दैट ही इज गुड इन एयर, जब लूक डियोंग को खरीदा था।
He's good on air. I guess even Very Ojas good. remember जब लूक डियोन आया था लोन पे, रोनाल्ड को मैंने एक लाइन बोली थी सिर्फ, ही इज गुड इन एयर, एंड आई वाज लाइक पूरे बायन मैच में यू आर नॉट गुड इन फिजिकल भाई, यू कुडंट रन इवन. आई कुड. So I mean, okay, I mean, see what Virgos का मैं एक चीज से confident हूँ, he's in his prime, मतलब इतना बुढ़ा भी नहीं है, he's 27 28 and he's 6'6", So हाइट he's बहुत ज्यादा है, लंबा, काफी काफी लंबा है. He's quite a, a tall, forward, and in good in physical. And actually, I guess that's where it turned out, because I don't know, Dutch managers have an obsession of buying Dutch forwards who's very tall. Like when Louis van Gaal bought Memphis in United, so I think so. ऐसा ही कुछ होगा. Plus one more player who's breaking out is Xavi Simons in PSV. मैंने क्यों जाने दिया उसको भाई? He's breaking out. He totally replaced Gakpo. Hmm. Like Xavi Simons He's is the so good. next मतलब Memphis ये Depay. one होता है ना जो मतलब you look at players from your youth academy wherein you're just like कि भाई यार कभी फ्यूचर में अगर ये बंदा दिख जाए ना, this guy is going to be crazy. So मतलब as he was going up the levels, every level he dominated, and then it was like चलो ठीक है अब इसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने का टाइम आ गया. And बासा है वो hesitant because at that time हमारी policy was कि बाहर से खरीद लेंगे कोई नहीं. एंड उससे मतलब इतना बड़ा स्क्रू अप हुआ फॉर अस टू बी सेलिंग जावी सिमंस हु वाज लाइक अ बारसा डीएनए थ्रू एंड थ्रू, like a Dutchman who's a midfielder forward, very Cruyffian vibes. Obviously not the height, but still, it's like this guy could play anywhere on the field for you, but you decide कि भाई we don't want to give you a contract that puts you up like makes you jump levels. Whereas PSG were like तू आजा तू एक सीजन हमारे साथ अंडर 19 खेल ले उसके बाद हम तेरे फर्स्ट टीम में डाल देंगे. And they paid him money for it, for like they paid money for him as well. I was like, yeah. Now the thing is, Xavi Simons का तो dream move हो गया है. In his home Hmm. country, selected for हाँ. the Dutch team, and a very long replacement for lots of Dutch forwards. And PSV को मतलब टोटल कोडी गैक्पो का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी मिल गया. उसको बेचा कोडी गैक्पो को, Xavi Simons का इन्वेस्टमेंट हो गया सही. And So उसके क्या ओजस numbers है? भाई, हम्म, क्या क्या बनाए? कुछ कुछ नहीं. I'm just saying कि जावी सिमंस के जो numbers है, that's for him, like this is his first season playing for the first team. हाँ हाँ. तो मतलब you don't expect कि इतना तोड़ू numbers rack up करेगा, but Bro, still like 24 goal and assist in 20 games. Not bad. which is Not bad wild. for it. And I I've been mean, following ओजस PSV भाई, this season. बहुत मजा आ रहा है. भाई ओजस भाई, क्या लगता है यूरोप में हम पीएसवी से भिड़ेंगे? पीएसवी कैन एक्साइटिंग साइड फॉर इन रूई वैन निस्टेलरॉय के अंडर, ओ वेरी एक्साइटिंग अटैक. नहीं, मैं हर साइड की रिस्पेक्ट करता हूँ जिन जो फॉरेन लीग्स की होती हैं. मैं बारसा की भी मतलब बारसा इज लुकिंग वेरी डेंजरस. पहले तो बारसा से निपटना है क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत क्वालिटी में फर्क आ जाता है ऐसे मैचेस में. हम एक ऐसे टीम के साथ कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे ना काफी सालों से, उस क्वालिटीज के साथ नहीं खेल रहे. अब हमने सिटी के साथ एक क्वालिटी टीम के साथ खेला, क्या रिजल्ट रहा? लिवरपूल 6-3. आर्सेनल वर गुड गेम्स, बट टू डिफीट बारसा इज लाइक इट विल बी वेरी 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 गुड रिजल्ट फॉर मी दिस सीजन. उसके बाद देखते हैं पीएसवी का क्या है. पीएसवी अगर मैं सच बताऊं तो एएक्स और पीएसवी एक ऐसी चीज है, वी हैव ऑलवेज नोन हाउ टू हैंडल डच टीम्स. ये मैंने 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने एएक्स को ही खेला था यूरोपा लीग फाइनल. यूरोपा फाइनल में. यस, और वो टीम बुरी नहीं थी. वो टीम एएक्स की बुरी नहीं थी. आई थिंक एफडीजे वाज आल्सो देयर. FDJ might have been there, but they had Casper Dolberg leading the line. क्लास. हाँ, मतलब वो टीम बुरी उस टाइम. डोलबर्ग, सी that time Dolberg was trending if I am not wrong. He was the original wonder kid तब. Yeah, नहीं वो I think we always know how to handle Dutch teams, and with due respect we will handle them. But the only team that we cannot handle right now, there are only two teams which I consider, that is Barca first, which we are going to face, and second is Arsenal. They are existing in the Europa League. कमिंग टू मेम्फिस डिपाई का भाई ऐसा टेल चल रहा है, या तो उसको खिलाओ या बेचो या बैठाओ. बिकॉज मेम्फिस डिपाई बिल्कुल साइन नहीं दिखा रहा अपने सोशल मीडिया पे दैट ही वांट्स टू लीव, और ही इज ही इज जस्ट मेकिंग सॉन्ग्स. उसने कहा वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आई एम बैक टू मेकिंग माय एल्बम्स, एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग गुड कॉन्ट्रैक्ट्स. ऐसा नहीं उसको कुछ बेकार कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वेज कट पे मिलता है. ही इज ऑलवेज गेटिंग अ वेरी बिग कॉन्ट्रैक्ट्स. So he can easily leave any club for money.
जो एक्चुअली वी डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मेम्फिस. वी वर लुकिंग कि ये कहीं ना कहीं तो लॉन्ग टर्म टिक ही जाएगा. लाइक ओलंपिक लियोन वाज हिज बेस्ट प्लेस वेयर ही हैड दैट 3 years or 4 years, because United में he didn't work under us. Barca wale got done with him very good. I don't know. He played so well before injury. He was their Mhm. top scorer last season. Now Memphis Depay has so many locations to go, but he couldn't choose because he won't get that same amount of money he was getting in his past prime years. Mhm. So Ojas bhai, as you said, that Devlin is a very big fan of Memphis. क्या मेम्फिस एक आप जो बता रहे थे कि हमें कैम पोजीशन पे कोई चाहिए जो कैम या सेंटर फॉरवर्ड देख ले, तो मेम्फिस कैन बी अ गुड ऑप्शन इन अ फ्री. नॉट सेइंग कि बारसा को तुम 8-10 मिलियन दो और फिर वो लाओ, जैसे चेल्सी ने ओबा के लिए दिया था. नहीं ओके, एथलेटिको मैड्रिड हैज ओपन द टॉक्स. लग ही नहीं, रहा था. Atletico Madrid will get this deal done. See what happens in this type of situation is that it happened with Giroud also. When Arsenal were adamant to sell him, he requested Wenger to sell him to a London club because he was settled there. That is why Giroud went to Chelsea. So Mhm. when a player like Depay and he doesn't know a club will sign him for more than 1 or 2 years, if Right. there's no long-term contract and the move happens, Mhm. shifting family to another country for I don't know whether it will be even for 2 years gets a Mhm. it's a task. So there must have been a way to keep Depay in Spain only. Right. And as Felix said that I want to move from Atletico, Atletico raised some agent talks with whoever the player is available for having the same type of traits as Felix. Right. And Felix is a tad different from Depay, but the traits on attack are quite similar. Mhm. So that is how usually this transfer works. I pushed for the deal of him being a free agent. I don't want Barca to earn out of it because what will happen is we will be paying somebody that we don't know if he is going to exist as the same player after 6 months or not. Right. And this is how usually transfers work. Good transfers work, which were not doing for past 7 to 8 years, is Mhm. looking at potential of a player not as an immediate impact, but what he brings on for the future. Like why Mhm. we given Ericsson a 3 year deal and Casemiro a 4 year deal? Like why are there differences in the years of the deals? Because we are giving the deals on the basis that the player can live up to his potential. If we see he's performing above his potential after that time, also we will give a deal again. This is Mhm. how deal is placed. Casemiro is the type of player that United thinks can work on a long-term basis. So they have Right. offered three or 4 years deal with a 1 year optional, I think so. But no one really said why is Ericsson getting a 3 year deal. Like it was not even raised, but people have realized. Ericsson is the second joint top assister in the league right now after Kevin De Bruyne. Every player has a wear out. Like every human being has a wear out time. Every Mhm. has a has a moment in his life where he thinks he cannot perform at top level and Hmm. being instead of being a liability. Why is Cruz thinking of retiring? Why Hmm. is thinking of retiring? Because he thinks he cannot perform at the same level that requires him Right. to perform at the ability of Real Madrid. So these are the kind of decisions I believe that if Depay terminated his contract mutually with Barca, it would have benefited Barca also. It would have Mhm. in their wage structure. Okay, I don't think it is helping much to Barca. Not it won't bring a change for that because Okay. Barca Hmm. has to dispose of players. They have to Right. dispose of players. See, Rafinha, they went after Rafinha. First of all, they were going for that if Leeds gets relegated, they will sign him for cheaper. They couldn't sign him for cheaper. They went after Rafinha, there goes an extra 20 million. They were thinking of 35, they invested 55. See, Hmm. they have Ansu Fati. I don't know why they're trying to sell him only Vinayak percent. Ferran player, I don't know why City sold him and now so I आपकी don't आवाज know. कट रही है ओजस भाई, बहुत ज्यादा कट कट हो रही है बहुत ज्यादा. Is my voice clear now? Yeah. हाँ, अब सही है. अब ऐसे Uh, बोलो. I don't know why Ferran Torres was sold by City.
and now why he's being sold by Barcelona? Again, Vinayak will answer that. But Barca need funds, and Depay has to be sold, or a loan has to be for obligation to buy whatever it is. Mhm. वरना Simple loan ग्रीजमैन will not जैसा हो help. जाएगा. I mean, see, Vinayak, good question. Like United का fun बना है for doing cheap, like shit transfers. You guys are joining us also with us. Philip Coutinho, okay, Arthur. उसके बाद क्या क्या That नाम was a नहीं लूँ. different era, Jesus. different management, different era. No, Arthur was not a what was not a bad signing. Was not Arthur a was, bad signing. He was a little overpaid, but we made our money off him. yeah, Arthur was But you guys bought panic फिर यानिक का भी कुछ हुआ नहीं. He terminated his contract and gone to Saudi. उसने ये क्या था? Saudi, Barca. and he went to UAE. Barca is something like they are confused what they have to do, and this He happens. agrees. I guess Vinayak agrees But also. Yeah, now that Javi is there, I feel there is a little bit more no, direction he towards what knows. he wants. But No, it just Javi knows what kind of player he wants in the team. But hmm, end of the day, the management will decide which type of players stay in the club. yeah. So that is there has to be a clear communication between the manager and the top level management. Andy Carroll. Andy ये कहाँ Carroll, से है? इसकी कहानी कोई पता है मेरे को क्या था इसका लोन का कहानी man. I know that Liverpool overpaid for him. That I know. no, no, 40 million. Andy Carroll was supposedly a target for I don't know किसका target था Us. ये भी. Yeah. Isn't Andy Carroll playing in the Turkish league? Yes, वो नहीं नहीं Andy Carroll तो Andy उसमें है लीग 2 में है. Andy लीग 2 में Carroll, खेल रहा है. Andy Carroll, I don't know where he is, but I don't know on what reference Vishal Bhai is saying that. But again, on Depay to Manchester United deal, however hot it was, that it will be like a homecoming, like we are giving homecoming since Ronaldo to every player. So it's it never seemed a good option to pay Barca money. With full respect to Barcelona, with full respect to the person sitting on this panel with us, Because of Frankie, he's like अब मेरे को पैसा देना ही नहीं है. Because of that नहीं Frankie crazy thing. not even Frankie. Let's why 6 months a player is getting his contract expired in 6 months and he's not playing regularly. If Depay was playing regularly for past 6 months, I had every right to ask for 15 million, 10 Exactly. million. आराम से. Like why he's not even playing, he's not even in the plans. He's like, yeah, it's a dead asset कुछ नहीं sitting कर on रहा है. हाँ. like let's make some money out of it. He's like a raddi that is kept on which doesn't have a use. You just sell it by kilos. I swear. Not a What do you it's want to say about Daniel Olmo? मतलब विनायक Daniel Olmo पता नहीं क्यों बारसा उसको जब से विंटर स्टार्ट हुआ है they're like talking with Daniel He Olmo wants and Xavi wants that Barca DNA ultimately, and Olmo being a La Masia guy, completely drilled in the Barcelona principles, the principles that he wants to replace see. किसको करेगा वो basically, मतलब right? let's see ना मतलब अभी we don't know what kind of an image he wants क्योंकि Xavi की image of the team changes on a half season to half season way. So मतलब we're never sure. He's just like if I stack too many good players, I'll be able to get some good results. Actually वही चीज shout out to Vishal भाई. If we don't get a striker top 4 will be that tough. Priel, UEL, Carabao about हम to सब में sign. ही है. Like, we are हाँ. about to sign a striker. Striker deal is almost completed. Just pray to God that no important player gets injured in the next 2 months. These 2 months are very heavy on fixtures. And we have Right. Barcelona near, I don't think it's near to Valentine's Day. It is around It Valentine's is. time. It is near to And Valentine's Day. it will be a very heavy love bite. It will be a very heavy love bite. If ब्रो बट बारसा की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है. विनायक ऑल्सो नोस की बारसा भी अभी किसको यार खिला रही है तेरे को पता है? मैं क्रिश्चियनसन, मैं क्रिश्चियनसन, कुंडन, But रॉबर्टो Christian is एस्पिरिकुएटा, awesome. What are you अराउखो. saying? यार हाँ. I see recency bias doesn't apply to the top European teams. First of all, Mhm. Bayerns, हाँ. you know, Milan teams, Juventus, Madrids. ठीक है हम कहाँ थे? ये recency bias जो है ना इसको नहीं apply होता. अच्छा. Barca when they I don't know how they got defeated from Frankfurt. It was last season. And that was like a surprise because I think Frankie got injured and
Yes, Somehow is Frankfurt managed to get 30,000 fans yeah. screaming at the Camp Nou. No, it's a very good luck that Frankfurt won the Europa. That you could have said that the good team defeated us. I'm still We will say that only. विनायक तो agree करता है. अगर हाँ. defeated, फ्रैंकफर्ट यूरोपा नहीं जीती होती तो Hmm. but एकदम वैसा हाल हो जाता. When you gone to Galatasaray नहीं but खेले थे तुम लोग. you Hmm. can't count. हम्म. रिसेंसी बायस ऐसे टॉप टीम्स के साथ नहीं चलती. अगर अगर बता दूं, और मैं एक चीज और आंसर करना चाहूंगा. डैनी ओल्मो, ये ला मासिया का जो भी सिस्टम है, आप पेड्री, गावी, एफडीजे, कैसी को साथ डैनी ओल्मो ला पाओगे? आपको एक मिडफील्डर बेचना एक पड़ेगा. मिनट या तो फ्रॉम कैसी कैसे है? जाएगा या तो गावी और पेड्री तो बेचेगा नहीं. जावी वो तो हाँ. घर और एफडीजे के लिए भी बोल दिया है कि नहीं बेच सकते. He's the captain. He's the captain. I find him No. to be a future captaincy material. in politician means Mhm. the manage whoever is managing your club, he's like he's somewhat different on the face, how he talks, and what he is doing inside the club is very different. Is very different. That is true. मतलब our Laporta, president भाई Laporta with god है alimony इसमें. with with Juan Laporta, what they do behind the scenes with Jordi Cruyff. Like it's like हम्म. we left winger. Why? See, why did Gakpo deal fall off? Forget the money United doesn't have. But tell me one thing: when you have Sancho, Garnacho, and Rashford on the left wing, and even if I agree that Gakpo is ready to play at number 9, but in reality, what is his original position? That is on the left wing. Started his career, and he has developed on in that role. See, Marshall came as a left winger. He developed into number 9. That is a different story. But signing another, even if I had funds, why would I buy a player who is a left winger converted to a center forward? I would buy a player who's a proper center forward, who is a proper number 9. So do you So think of Vergos is a perfect answer? हमें बना बनाए number 9 no, मिल रहा है. I don't think so. He's a perfect answer. I think he's a necessary answer. He's a हम्म. necessary. It is a necessary He's signing that for me. quick fix जो tape लगती है Yes, on a it's like meeting हो. whatever is going on the Twitter, the creative writing on the Twitter is happening that we are saving for the summer. We are going after Hurricanes and the Ossemans. Like every other club is just sitting on, let Manchester United try. We will just watch these top strikers getting sold everywhere. No, it's like Igalo, like Kushagra is This is saying, the like Igalo solution. Yes. yeah, it's something. It's a necessary deal that is happening, and see, ETH has identified his striker for the next, हम्म. uh, season. Why I feel But Victor Osimhen is that guy only. मतलब he's ready to go all out on I Victor Osimhen. I don't know. People are have followed Napoli in recent years. I have, I They have, I have. they just don't Why? sell players easily. They don't हाँ. sell players easily. They sold हम्म. Koulibaly, I think, after when 1 year was left in his contract, 35 and he million के was लिए. asking, for double the salary, whatever Right. he was earning there. And he was like, yeah, Chelsea wants to buy it. Whatever they will benefit. They don't sell players. Napoli doesn't sell players easily outside. When they sold Higuain to Juventus, that was कितना 100 million euro का deal. Yes, Right. and 120, 120, and not 100, Osimhen will 120. have a price tag of 100 plus. हाँ, आराम easy. से. They bought him for Easy. 70. Yeah, Right. and Osimhen, see, sometimes grass is greener on the other side. Whatever happens in that league stays in that league only, please. Serie A is something Especially like Serie A. Serie A is a league that we really don't know how the players will do when they come out of it. Like What about Koulibaly. Jonathan David? Ojas bhai? No, Jonathan Really David is forward. I think he's in League A. He's performing really well for the past 2 seasons. I'm forgetting his team. He played with Renato Sanchez and Lily. He is Lily. in Lily. And I think he's a very good striker. But if you are saying that I want a player for a long term that will grow steadily into my team, that is fine. But if I want a player that I want on the first day of the first match of the week of the season on the Harry pitch, that Kane. one player I consider from Italian league. I respect OCM, but it is Vlahovic. The Of only player, course. Of course. It has to be Vlahovic. Lethal. and that also, and I think that also Barca is saying that we are looking for to sign him. So
We are looking. I mean, कहने की बात तो बहुत होती है, मतलब you put out like 5-6 names in the market, क्या पता एक आध मिल जाए, manifest it. ये Barca is very good, just confusing the other teams. Like, yeah, you are going for Exactly. that They're like the player. proper disruptors. Right. But only one player that I consider of the quality of Manchester United. I respect Osimhen, but I'm not paying Dusan 120. Vlahovic. I'm Yeah. not playing 120. If I can pay 70 to Juventus and get this deal done, why should I pay extra 50 for a proper bully that is happening over us from Napoli? Actually, Napoli is very chunt. उन्होंने जब कुलबाली बेचा, उन्होंने किम मिंजे का परमानेंट कर लिया. Now किम मिंजे is the best center back in Syria, and now उसको ट्रांसफर लिस्ट पे डाल देंगे अगले सीजन की. उससे Bro, हमें कुछ 60-80 मिलियन. sell Maguire to Napoli and he will be the best centre back in the world. Like it's no disrespect to the league, but Syria is meant for defenders. Syria is a league that has always Maldini, Bonucci, Chileni. players with good defensive setups. Right. Chiellini, Barzali, Bonucci, Maldini. I don't remember the fourth Chiellini. defender. Fourth Chiellini. defender of Juventus long ago. लेस्टर चिलिन लेस्टर कुछ उसका एल से नाम था. एल से No, नाम no, था. no. Last China. Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, then इनका वो भी तो था अभी Daniel Rugani. Yes, Rugani was a prospect, and they signed Dillet. Dillet just didn't suit the game. Dillet, when there was a transition happening from Ajax to whatever the players were leaving, and when FDJ went to Barca, I really believed that he was going to follow. Dillet was going to follow. Yeah, I also thought that Barca will just crush the deal for Dillet, but it didn't happen. And then I'm for long, just imagining things that Dillet will come to Manchester United, and he has now gone to Bayern Munich. So, and it's Dillet is very turned into beast there. Simple. it's very tough. Only if you have the right strategy, and Erik ten Hag has decided enough with the Martial, enough with the injuries, but he needs a player to starting from day one. Whether it's Harry Kane. this way, what about Harry Kane? Like Rio Ferdinand and Patrick Evra तो भाई चिल्ला के बोल रहे Harry Kane ले आओ, Harry Kane ले आओ. I am also someone like who roots for Harry Kane. I don't know why. I don't even watch Tottenham games. I just root for that player because I think, see, there is a vibe thing with me. And I think Harry Kane will look really good in Manchester in red. See, that is... It fits the profile to a T. That actually that happened with me when Wijnaldum chose, I think, PSG over Barca. Right. Like I thought Wijnaldum will look so good in Barca, running the midfield, but I think he knew the future of the financial crisis. I don't know what. Because again, we were looking to sign him for a free, so yeah. So it happens. You just find a vibe with the player, like who I see a person leading a number 9 for my team. Yeah, Harry Kane looks very good. I even dreamed in 2015 and 16 that Eriksen will look, and Eriksen is right now playing for Manchester United. A deal that should have happened a long ago. Same for Schweinsteiger. I remember when Schweinsteiger was in his prime, he looked like a perfect United player. It's sometimes it's vibes. It's like Harry Kane has the quality, but I just believe that he has. I feel the vibe that he's born to play for Manchester United at least once in his career. He's born to play for Manchester United. And he was so close. That come from Spurs tend to do well at United. Yeah, and he was so close to City last summer that I think it was last summer. I don't know. It was I think 2 seasons in a row. But City, if he would have signed for City. कुशागरी ने एकदम वो वाली लाइन बोल दी जो लुकास पेरेस ने करा है, बट उसने फोर्सफुली नहीं करा, इसको करना पड़ेगा. नहीं, कुशागरी ने वो लाइन बोली है जो नेमार ने करा था. 220 मिलियन जब बारसा को दिए थे, रिलीज क्लॉज खुद पे किया था when Barca rejected the offer, and I cannot be wrong about this क्योंकि मैं रात को पूरे 3-4 घंटे जगा था इस ट्रांसफर के लिए. इसके बारे में विनायक बताएगा what happened with नेमार का चीज, इतना कंफ्यूजिंग था. बार्सिलोना इसको जाने कैसे दिया? यार मैंने बहुत लोगों को मिडिल फिंगर दिखाई थी. I was like, भाई नेमार का रिलीज क्लॉज बहुत बड़ा है, वो नहीं जा रहा.
मुझे लोग कह रहे ब्रो जा रहा है, तुझे नहीं पता, तो वो जा रहा है, लाइक पागल हो गए क्या? 200 मिलियन कौन देगा? And Neymar representative paid 220 million, not PSG representative. Neymar representative paid 220 million to Barca, and they एक had से मतलब still पीएसजी का पैसा नहीं गया है बिल्कुल भी। नहीं नहीं, PSG का ही क्या PSG है। ने बाद में नेमार को दिया। अच्छा Neymar representatives paid 220 million to Barca to get a contract termination. वो Barca was like, see, तब से वो सिस्टम आया कि 1 बिलियन रिलीज क्लॉज है हर हाँ, ला लीगा के हाँ प्लेयर और में। सब, हाँ, Benzema has a 1 billion release clause, Benzema was the first player to get a 1 billion release clause. and Pedri has a 1 billion Pedri release has clause. one, उसको Fati has ऑब्वियसली है one. हाँ, भाई। even पेड्री बेलिंगम इस टाइप ऑफ प्लेयर जिसके लिए ना क्लब्स पागल होंगे, जिनका पैसा है अंधा। पेड्री नहीं, बेलिंगम। अगर ये वेगोस्ट वाली बात है ना, सी वेगोस्ट को कभी भी एक ऐसे सिचुएशन में नहीं डालेंगे, क्योंकि बेसिकतास डजंट वांट। देखो यार, एक क्लब का भी ना इमेज होती है, एक रेपुटेशन होती है मार्केट में, कि जब प्लेयर्स आएंगे तो अगर मेरी ऐसी हालत करोगे तो मैं क्यों ज्वाइन करूंगा। तो समथिंग विल इवेंचुअली वर्क आउट बिटवीन बेसिकतास एंड बर्नले, the deal will go through. Weghorst will wear United red, and if he scores goals, and somehow because of that we don't sign a striker, I will personally visit him. Lovra Meher, नहीं, I don't know मायर, how. Mayer, Lovra He's Mayer. that क्रोएशियन गाय ना जो लंबे क्रोएशियन वाला। वंडर किड, हाँ, क्रोएशियन वंडर किड। नहीं, क्रोएशियन वंडर किड एक ही है, उसका नाम है योस्को ग्वार्डियोल। Bro, one weird stat I got: Luis Enrique going to Atletico Madrid and Simeone stepping down after this season. Vinayak, क्या लग रहा है? ना, Simeone will never leave Atletico Madrid. No, he said he wants to. He will No, have no, to no. drag him season, out of नहीं, Atletico Madrid. अगर सीजन अच्छा नहीं गया, अगर इसका सीजन अच्छा नहीं जाता, he said I will. Simeone will leave Atletico. That will happen, but Enrique will never go to Atletico. हाँ, वो आइडियोलॉजी डिफरेंस है। वरना बारसा वाले छोड़ेंगे नहीं इसको। बारसा फैंस will not leave Enrique behind, मतलब। नहीं, अरे नहीं, What? point is, See, first of all, Barca and Atletico are not rivals. Barca is They way ahead. are. Barca No, is they way are. ahead. rivals. They're not rivals. They're हम तो not कहते हैं rivals. the enemy of my enemy is Like my it- friend. फेक राइवलरी क्रिएट हो रखी है ना। मैं बताता हूँ, हमारे वो टॉटनहम वाले एक दिन कहने लग गए हमारे ट्विटर में, वी आर राइवल्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट्स लाइक आई वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग। It's Atletico is a very good team, but they're not rivals of Barcelona. They recently they have found a scale of performance that have put them into a level. Who But are the rivals? I Closest also thing don't to a know. rivalry that came about was that season when Atletico won the Savic title. and- yes, I think they defeated Barca. No, they drew Uh, against Barca, but I think उनका head-to-head system होता है, so that's how they won the title at Camp Nou. I guess they fought yesterday also. The Ferran and rivalry वो is more लड़े of थे। a grudge moment. नहीं, Bro, Dembele scored the winner. Dembele scored the winner. no, but they fought yesterday. दोनों फेरान और वो लड़े थे। I guess who अच्छा, fought फेरान एंड yesterday? सावेज लड़े थे, वो तो अलग थी। वो तो उसको उसको गाली दे रहा था, उसको मार रहा था। फेरान actually gave it back. चलो, we will discuss it again. This transfer वही। topic in 10 days time, क्या deals struck होती हैं, और आप हमें बताओ। क्लोजिंग ओपिनियंस ले ले पुलकित भाई, फिर हम रैप अप करते हैं। We have a Yeah, privilege. yeah. Closing opinion. Like, what do you think, Vinayak, for a club the deals could wrap in this 15 days? कौन जा सकता है? For मतलब United. basically. नहीं, for Barca, फिर United. For Barca, I don't think हम कुछ wrap up कर पाएंगे unless the Memphis Depay deal goes through. If Depay वाला thing happens, then that will be the only deal. Barca don't think they can afford anyone at the moment. And what for United? Do you think only Weghorst, or do you think a player like Depay also can come here? By I don't think after Depay. I think Weghorst only. Frankie, okay, Hey. Frankie. नहीं, ये कुशाग्रे सिंह Wolves are interested in Wan Bissaka. कुशाग्रे भाई, I don't think so. Wan Bissaka will be sold this Wolves are- winter. Uh-huh. Okay, so these are the three Kushagra- targets. Yeah, But I think Kane. Sesko doesn't really play striker. yeah, Benjamin Sesko has a pre-agreed deal with one of the RB clubs, if I'm not wrong. With नहीं, Leipzig. Leipzig में वो देखो हुआ क्या हाँ, है? Leipzig के साथ है, हाँ। Leipzig have given
Salzburg 35 million. Now United will give Leipzig 20 million कि तू यहाँ से आ जा, मतलब रुक कर वहां से आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, लाइक नहीं, एमरसन का हुआ था, लाइक like एमरसन का हुआ था. Leipzig has bought Sesko for I think June 2023, Yeah. and Yeah. it is a 6 years contract. Mhm. And now what will happen is both the हाँ, RB clubs will milk विशाल भाई money सोनी out कुछ of पर है. Sesko deal. हम्म. They will milk money, like there is a future sale on percentage, like 10% will go to the Salzburg, and हम्म. whatever happens in the Leipzig, like it's the same Red Bull group. So Sesko is planned to leave in 2 years' time. That is confirmed. He is 100+ million signing for anyone in the near future. Otherwise RB clubs won't be playing this game. हम्म. क्योंकि So Sesko, the player that he reminds me of the most is Robert Lewandowski. मतलब he's a proper like for like Lewandowski replacement. मेरे को तो I somehow believe that Sesko is a kind of player that will have the capability of any strong, I think, tall striker. Lewandowski is a more of a complete striker. He has everything. But Sesko will be someone like he will be running the channels like anything. He will be just running. And also he's surprisingly creative, which I find very funny for a tall striker. Yeah, I think it's trending right now. It's trending in this era that a striker has to be creative because the wing play has got involved so much. The wingers are contributing so much to the team. Earlier, there was a policy of स्विगी वाला आ तो रहा है. wingers were basically a type of players who used to provide width to the attack and the cross in the box. So राइट. Crosses. चलो फिर रैप करते हैं, मतलब हाँ, मोर ओवर फॉर यूनाइटेड इज वेरगोस्ट एंड फॉर बारसा इज लाइक कोई जाएगा तो ठीक है, पैसा आने की बात है, yes, वरना और मेरे को नहीं लगता डिपाई का कुछ ज्यादा मेजर होने वाला है. अब यूनाइटेड का डिपाई विल गो टू करा. एथलेटिको, आई गेस. हाँ. डिपाई अगर एथलेटिको होगा जाएगा तो एथलेटिको होगा, वरना नहीं होगा. हाँ. वही, आई गेस. और कुछ है नहीं, ये मार्केट जो था वो चेल्सी ने डन करा है. चेल्सी का इट्स लाइक चेल्सी चेल्सी ने डन विंडो. करा एंड जिस पे लिवरपूल पैसा है वो खेल रहा है भाई. जिस पे पैसा वो खेल रहा है. बस बात खत्म, यही वाली. चलो सही भाई, है. लेट्स रैप इट. होप यू गाइस सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, टेल अस इन द कमेंट्स कि कौन आना चाहिए यूनाइटेड, कौन नहीं, एंड आल्सो प्रीव्यू कमिंग हेड, तो प्लीज स्टे ऑन द चैनल. आपको जिस भाई दिखेंगे चार्ल्टन वाले में. चल, सी यू गाइस, You guys. and don't forget to come for the screening for Manchester City game also. See you there.